Hello dear students. Today I am going to discuss about the method of partial fraction. How to integrate using the method of partial fraction. Okay. So there are some rule of that is using method of partial fraction. First we discuss about the rule and then start to solve the problem. Okay. So first the rule is there are some rational polynomial function this side rational polynomial function and what is there called a partial fraction. This side they are partial fraction. Okay. First we consider px plus q divided by x minus a into what x minus b, where a not equal to what b. This is particular rational polynomial function, and this in this rational polynomial function you see numerator is what is a polynomial, denominator is also a polynomial. So it is a rational polynomial function. What is the degree? Its degree is 1, and if you multiply it x, it will be highest power of x will be 2, and therefore its degree is equal to what 2. Since a not equal to b, therefore these two factor are two different factor. Okay, two distinct factor. In such cases, whenever you get this type of form of a rational polynomial function, there is a partial fractions are of the type a by x minus a plus b by x minus b. This is of the type. Okay. So if you get such type of rational polynomial function, its partial fraction will be of this type. What is a and b? A and b are unknown constant. Our aim is to find, this is what? Our aim is to find what? A and b. For example, I have given to you. Suppose that here p is what? Here q may be 0. Okay. Q may be 0, q may be 0 or may not be 0, but p always a non-zero quantity. P may be also 0. Here p, q may be non-zero, p, q, any one of them is 0. Both are not together 0, either p 0 or q 0, but p and q may not be equal to 0. तो आप देखिए अगर p 0 हो जाए तो क्या होगा, सिर्फ q रहेगा ऊपर में. If q is equal to 0, then क्या होगा, term will be only px type, and suppose p not equal to 0 and q not equal to 0, then what will happen? It will be of the type px plus q. Okay. I am choosing a particular expression such 1 by, I have discussed already, x plus 1 into x plus 2. Okay. Here you see a and b are any real number. A may be negative, a may be positive. So negative होगा तो इसमें प्लस भी आ सकता है. Okay, suppose a is negative में मिलके क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है. Okay, so here a and b are what? The may be positive, may be negative, any type of real number. Clear? Now if you compare this with this, you see what is q? Q equal to what? 1 and p equal to what? 0. p अगर 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगी and q equal to 1 हो जाएगी. तो न्यूमरेटर 1 हो गया कि नहीं? And denominator was here a equal to what? -1 and b equal to what? -2. A equal to 1 and b equal to -2. So this can be a particular expression of this type. Clear? If you, what will be its, there is a partial fraction. It can be written as what? 1 by x plus 1 minus 1 by x plus 2. Or it can be written as what? 1 by x plus 1 plus minus 1 by x plus 2. Can I write this? So if you take LCM, आपको उसको LCM लेके देखो, ultimately ये मिलेगा. ठीक है? I am not going to explain. In such cases, we see what is the value of capital A. Capital A is equal to what? 1, and capital B equal to what? -1. Capital A equal to what? 1. Compare करो उसके साथ, तो क्या होगा? ये A का वैल्यू क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, and B का वैल्यू क्या हो रहा है? -1 हो रहा है. It means, and in such type of expressions, उसका partial fraction इस type का ही होता है. What will be the type? Type will be of this type.
Understood? If this is a linear polynomial function of this type and its partial fraction will be of this type. समझ में आ रहा है? partial fraction कैसा होगा? a by linear plus b by linear. Here a means what? 1 in this particular example, a by linear plus b by linear. समझ में आ रहा है? तो whenever you get such type of expression, you immediately write. For suppose I am giving an example. Another example. Suppose x plus 1 by x minus 1 into x minus 3. तो उसका क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? a by x minus 1 plus b by x minus 3. ठीक है, उसमें a एंड b का वैल्यू हम लोगों को निकालना है. ठीक है, a एंड b का वैल्यू क्या निकालना है? हमें निकालना है. तो दिस इज अननोन क्वांटिटी. अंडरस्टूड? तो हाउ टू फाइंड a एंड b we will discuss later on. Okay, first you know that rational polynomial function and what is its partial fraction. In both cases you see here, this is denominator is what? X minus a into x minus b, and if you take LCM here, denominator is what? X minus a into x minus. Very important. Denominator क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए. So another example, suppose px plus q. This is number 1. This is number 2. x minus a whole square. ठीक है, इस बार क्या है? रूट्स क्या है? सेम है. उसका फैक्टर क्या है? आई एम नॉट सेइंग रूट्स. फैक्टर क्या है? इसमें डिफरेंट है. इसमें फैक्टर क्या है? सेम है. x माइनस a इंटू एक्स माइनस a. Here a is equal to what? b. In this case what? a equal to what? b. What is the partial fraction? Partial fraction क्या है? Rule is a by x minus a plus b by x minus a whole square. आप लोगों को शायद दिमाग में आया होगा कि सर टू फैक्टर है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो होना चाहिए एक्स ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए. अगर इसमें अगर एक्स माइनस ए लिख दिया जाए तो क्या हो रहा है? आप एलसीएम लेके देखो. एलसीएम लेने के बाद क्या होगा? इट बिकम्स व्हाट? एक्स माइनस ए. डिनोमिनेटर एक्स माइनस ए होगा और न्यूमरेटर तो ऐसा होगा. ठीक है, तो दोनों को अगर ऐड करते हैं a प्लस बी होगा कि नहीं? अंडरस्टूड? तो फाइनली द डिनोमिनेटर बिकम्स व्हाट? दिस इज x माइनस ए एंड हेयर डिनोमिनेटर इज व्हाट? x माइनस ए होल स्क्वायर. तो दोनों इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम रिजॉल्विंग दिस पर्टिकुलर रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन इनटू ए पार्शियल फ्रैक्शन. और दोनों इक्वल होना चाहिए. दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बिकॉज डिनोमिनेटर आर नॉट सेम. क्लियर? सो इसीलिए वहाँ में क्या होना चाहिए? x माइनस ए होल स्क्वायर दिया जाता है. व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर क्या होगा? x माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगी. एंड ये क्या होगा? a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी, ऐसा होगा. ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. अंडरस्टूड? टू मेक द डिनोमिनेटर सेम व्हाट वी हैव डू? a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई व्हाट? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर लिखा है. ठीक है. So if the denominator is factorized into two distinct factor, then you have to write like that. And if the denominator is again factorized, but the factor are not repeated, not distinct, तो आप कैसे लिखेंगे? इस टाइप लिखेंगे. ठीक है. नंबर 3, सपोज ये 2 हो गया. अभी क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई व्हाट? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू व्हाट? एक्स माइनस सी. इन सच केसेस व्हाट विल हैपन? ऊपर में क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है या लिनियर टर्म होगा. 2 हो सकता है. इफ p इक्वल टू 0 तो इट विल बी कांस्टेंट, एंड इफ q इक्वल टू 0 एंड p नॉन 0 इट विल बी ए लिनियर फंक्शन. बट हियर इन दिस केस व्हाट हैपन? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर. डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है. और न्यूमरेटर में क्या हो रहा है? हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है? एक्स इंटू एक्स क्या हो रहा है? व्हाट हैपन? दैट इज व्हाट? एक्स क्यूब हो रहा है. तो अगेन इट इज़ ए प्रॉपर रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन. एंड इन सच केसेस द पार्शियल फ्रैक्शन आर a by x minus a, b by x minus b, c by what? X minus c. Okay, we will introduce 3 constant because there are 3 different linear factor. 3 different linear factor are there. In such cases what will happen?
इसमें क्या हो सकता है, सपोज p का वैल्यू 0 हो जाए, q का वैल्यू 0 हो जाए एंड r नॉन जीरो, तो ऊपर में क्या रहेगा, ओनली कांस्टेंट रह सकता है। इफ सपोज ओनली कांस्टेंट इज देयर, रूल इज सेम। ओके, सपोज p इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, लीनियर टाइप हो सकता है। अगर लीनियर टाइप होगा फिर भी सेम रूल, ठीक है। एंड इफ p नॉन जीरो, q नॉन जीरो एंड r नॉन जीरो, ठीक है, तीनों नॉन जीरो हो जाए तो क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल बी ए क्वाड्रेटिक, इट विल बी ए क्वाड। मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है या लीनियर हो सकता है या ओनली कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाईएस्ट कहाँ से शुरू होगा, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन व्हाट, 0 डिग्री, एंड इन सच केसेस रूल इज सेम। ओके, फॉर एग्जाम्पल suppose you get 1 by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, ऐसा अगर आपको मिल गया तो आप क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू a by x minus 1, b by x minus 2, c by x minus 3। if suppose this is x twice x plus 1, ऐसा हो गया, फिर भी रूल सेम है। if suppose it is x square plus x plus 1, x square plus x plus 1, in such cases what happen, rule is same। समझ में आ रहा है? now if among these 3 distinct factor, if any 2 factor are same, जैसे a equal to b हो गया तो क्या होगा, x minus a into x minus a, तो x minus a whole square हो जाएगी। so in such cases what is the partial fraction? number 4, numerator is same, x minus a whole square into x minus c, ठीक है। 2 factor are same, 1 factor is different। in such cases the rule is like this, first you write individual a by x minus c, then you write b by x minus a, and then finally write c by x minus a whole square। why I have written, because if you take LCM लेने के बाद क्या होगा, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, तो दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए, इसमें डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टू मेक डिनोमिनेटर सेम व्हाट वी विल डू, दैट इज वी हैव टू इंट्रोड्यूस द रिजोल्यूशन ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन इज इन दिस मैनर। ओके, सो ये रूल अगर पता है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अनदर इज व्हाट, px square plus qx plus r, here denominator is what, x minus a into x square plus bx plus c। इसमें देखो 2 फैक्टर है, 1 फैक्टर इज लीनियर, अदर फैक्टर इज क्वाड्रेटिक। अगर ऐसा हो जाए नीचे तो आपका हाईएस्ट पावर कितना है, x क्यूब, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज व्हाट 3, सो डिग्री 3 एंड डिग्री 2, सो इट इज ए proper rational polynomial function, it is a proper rational polynomial function। what is इसका partial fraction, we write like that, a by linear and नीचे क्या है, x square plus bx plus c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक जब डिग्री 2 होता है, अर्लियर प्रॉब्लम में देखो डिग्री जब 2 होता है तो हम कितना कांस्टेंट यूज़ किया था, 2 कांस्टेंट यूज़ किया था। इसमें डिग्री कितना है, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, इसमें x होगा 3 होता है, तो कांस्टेंट कितना ऐड होता है, 3 ऐड होती। तो इसमें कांस्टेंट कैसा होगा, इसमें क्वाड्रेटिक के ऊपर एक लीनियर टर्म आएगी, बी एक्स प्लस सी टाइप। सो हाउ मेनी कांस्टेंट, ए बी सी, वी हैव यूज हाउ मेनी कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैनॉट बी फैक्टराइज, कैनॉट बी फैक्टराइज। ये अगर फैक्टराइज हो जाता फिर हम पहले रूल में चले जाते, again what, it will be x minus a, and if it can be factorized then it will be x minus b, x minus c, then ultimately it will be of ये टाइप नहीं है, इसका प्रीवियस जो टाइप है उस टाइप में चले जाएगी। so that's why this particular expression cannot be factorized, it is linear, it is quadratic। how to introduce the constant a by linear, and since quadratic is there, ऊपर उसके ऊपर में क्या होगा, एक linear term होगा bx plus c टाइप, ठीक है। in this way we have, you see, you take the LCM, the denominator becomes what, same with this। so these are the 5 or 6 rules are there, you have to go through this rule, you have to understand this rule,
and if you utilize in the problem, then what happen, it will be very easy for you, okay, to solve the particular problem. Let us start to solve one or two questions. So you are going to solve, suppose x by x minus 1 into x minus 2 dx. This is the integral you are going to do. Clear? In this integral, what you see, denominator is factor. Whenever you see denominator is factorized, immediately in your mind, what happens, such type of function, you have to use the method of partial fraction. And method of partial fraction is little easier. First, our aim is to resolve this into partial fraction. So let us suppose that let x by x minus 1 into x minus 2. This is of the type 1, linear divided by quadratic, and that quadratic expression is in terms of two linear factor, product of two linear factor, factorize हुआ है, तो पहला type है, तो पहला type में how you can introduce, you can take a by x minus 1 and b by x minus 2, ठीक है. उसका अगर एलसीएम दिया जाए तो क्या होगा, x माइनस 1 इंटू वाट x माइनस 2, ऊपर में क्या होगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, होगा कि नहीं. नाउ इसको कैंसिल करो, उसको कैंसिल करो, तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर x है, इसमें क्या है, न्यूमरेटर यही है, दोनों इक्वल होगा. देयरफॉर x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1. क्लियर? Now our aim is to find what constant, what a and b. अगर हमारा कांस्टेंट a and b निकल जाए तो a and b का वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रल इतना आसानी से हो जाएगी. ठीक है. टू फाइंड द कांस्टेंट a, देयर इज ए रूल, देयर आर टू टाइप ऑफ रूल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. आपका जो रूल पसंद होती है वो कर सकते हो. दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो उसमें क्या हो सकता है, दोनों साइड का x का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम कंपेयर करके a b निकाल सकते हैं. ये एक रूल है. दूसरा रूल है टू फाइंड सपोज a, अगर a निकालना है तो उस टर्म को 0 बनाना है, उस टर्म को क्या करना है, 0 बनाना है. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, एट दैट टाइम यू हैव टू मेक दिस टर्म इज इक्वल टू व्हाट, 0. ठीक है, क्लियर. नाउ हाउ दिस टर्म बिकम 0, ये कब 0 होगा, b तो आप कह नहीं सकते, इट कैन बी एनीथिंग कांस्टेंट. सो यू कैन टेक x इज 1. इफ़ यू टेक x इज इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, अल्टीमेटली ये टर्म 0 हो जाएगी. एंड जब ये टर्म खत्म हो जाएगी दैट मीन आवर एम इज टू व्हाट, वी हैव टू रिमूव b रिमूव करके a निकालना है. तो पुटिंग व्हाट, फर्स्ट रूल इज व्हाट, फर्स्ट यू कैन टेक पुटिंग x इक्वल टू 1. x अगर 1 पुट करें लेफ्ट हैंड साइड में 1 क्या होगा, x का वैल्यू 1 होगा. ये तो 0 हो रहा है, इसमें 1 पुट करो, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस a. एंड फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू व्हाट, माइनस 1. ठीक है. नाउ टू फाइंड व्हाट b, जब b निकालेंगे, whenever you are going to find the value of b, what you will do, you have to make this term 0. how you can make this term 0, putting x is equal to what, 2. so x is equal to 2 implies putting x is equal to 2, the left hand side is what, 2, एंड राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ये तो 0 हो रहा है, तो मैं 2 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 b. तो b का वैल्यू क्या है, 2 है. सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस. सो b इज 2. अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, a इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1, b इक्वल टू व्हाट, 2. ठीक है. तो फाइनली you can replace a equal to what, minus 1, b equal to what, 2. So your particular expression, this one, is resolved into partial fraction. Now your aim is to find integration, right? So you have to take integral on both sides, integration dx. जब इंटीग्रल देंगे उसके साथ dx होगा. So if you take integral in the left hand side, you have to take integral in the right hand side. So integration, okay, dx. Okay. Now this integral can be separate. माइनस तो है, माइनस बाहर आएगी, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर आएगी, 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स. ओके. एंड दिस इंटीग्रल इट इज़ ऑफ व्हाट टाइप,
It is of the type integration dx by what? Ax plus b type. You know this type of integral. What is the formula? Log modulus ax plus b. Any type of any integration dx by linear जब होगा तो log modulus formula आएगी, ठीक है. But what is the coefficient of x? It is what? A. It will be multiplied by 1 by a. समझ में आ रहा है? Q multiplied by 1 by a. If you take differentiation, ddx of ax plus b is equal to what? A. आप डिफरेंशिएट करके क्या मिल रहा है? a मिल रहा है. और आप इधर क्या कर रहे हो? इंटीग्रेट कर रहे हो. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. सो इफ व्हाट इज द रेसिप्रोकल, इसमें डिफरेंशिएशन में क्या आ रहा है? a आ रहा है, इंटीग्रल में क्या आ रहा है? 1 by a आएगी, ठीक है. तो वो एक रिवर्स प्रोसेस होती है, दिस इज द रूल. ओके, सो माइनस उस रूल यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन dx बाई लीनियर इक्वल टू लॉग मॉडुलस x माइनस 1. x का कोफिशिएंट इधर 1 है तो नो प्रॉब्लम, प्लस 2 इंटू लॉग modulus x minus 2 and finally add c. So this is the answer. Okay, so this type of problem can be solved by the method of partial fraction. Okay, in such type of cases, how to find the value of a? If you are going to find one constant by putting or by removing all other constant. पहले अगर a निकालेंगे तो b ख़त्म करना होगा और फिर b निकालेंगे तो a को क्या करना होगा? रिमूव करना पड़ेगा. इसके बाद क्या होगा? कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है. समझ में आ रहा है? So in the next class I will solve more problems related to particular topic, and please go through this video and try to understand what is the resolution of partial fraction of a particular rational polynomial function. I have given 5 rules. You have to go through all the 5 rules, and this you have to remember. If you do not remember, then it will be difficult for you. So 2-3 times you go through this particular rule and solve few problems, then automatically you will understand. Okay, so in the next class I will solve more problems related to this particular topic. So thank you very much.